Good morning, class. Welcome back again. We'll be discussing in-house or outsource and sourcing and procurement. Sourcing and procurement, we have already discussed how and where the data analytics need to be used in the sourcing and procurement in our previous video. So you can just refer that. We have discussed the key areas where data analytics is must in the sourcing and procurement. Okay, here in the video, we'll be discussing the in-house or outsource. Okay, so what is in-house? In-house means basically all those activities that are being internally managed by the company's own team. Okay, so the company is not sharing with any other third party. It is doing those particular activity itself. So what is the reason why it is not sharing and why it is going for in-house? The reason may be it does not want to share its control. So, in order to maintain all the control of the procurement processes within the company ensures a high level of control over operations and quality. It does not want to compromise its quality. Maybe this is the reason that the company is going for in-house. Okay, the next is confidentiality. Confidentiality means it does not want to share and it wants to protect its sensitive data and intellectual property. That is the reason it may not be ready to share or go for outsource. The other reason may be alignment. The company want to ensure that the procurement strategies, all the activities related to the company's overall goal and culture should be aligned. Okay, and the product is not compromised. Okay, that may be the reason that the company is doing that activity in-house only. Okay, and we have already discussed the example that the Apple, it gives its assembling service and activities for the outsource, but it never shares its designing and all. It always does its designing in-house only. Okay, so all the core activities or the formula part is or the intellectual part, these are not being shared. These are done in the in-house only. Okay, so what are the benefit of doing? Benefit is you can, like, if you are like uh, if you are doing that activity in-house, then you can customize it as per the requirement of the company needs. Okay, because there is no third party involved, then there is direct communication between all the departments and everything, right? However, the disadvantage is there is the requirement of the resources. The resources may be the physical infrastructure may be required, the resource person to analyze those or the expert of that may be required. So the resource uh, is one constraint, you can say. If the organization does not have that infrastructure or does not have that intellectual persons or resource persons to handle that, then the company has no other option than to give it as an outsource. Okay, so resource constraint is one disadvantage, cons, you can say. And there is less flexibility. Reason being कि अगर आप एक बार ही वो प्रोजेक्ट ले लेते हो और आप एक बार स्टार्ट कर देते हो विथ, लाइक इफ यू आर डूइंग इन हाउस, तो आपने पूरी इंफ्रा बनाया और उसके बाद आपने रिसोर्स पर्सन हायर किया एंड देन बस सम और द अदर रीजन इफ दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड, देन द होल इंफ्रास्ट्रक्चर एवरीथिंग इज वेस्टेड. हाउएवर अगर आपने इसको आउटसोर्स किया रहता तो आपका ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान होता, आपको एक कंपेंसेशन अमाउंट देना पड़ता उस थर्ड पार्टी को, है ना. तो इसमें यही इसका डिसएडवांटेज है कि आपको आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो रहती है वो थोड़ी लिमिटेड होती है, बिकॉज आपने उतना खर्च पहले कर लिया है. ओके, एग्जाम्पल मैंने एप्पल का दिया है, यू कैन जस्ट रीड द एग्जाम्पल. मूविंग टू द आउटसोर्स सोर्सिंग. आउटसोर्स सोर्सिंग का मतलब क्या होता है? मींस इट बेसिकली इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर्स, ओके, टू मैनेज द सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी. सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी को आउटसोर्स किया जा रहा है कि बाहर वाले आउटसाइडर थर्ड पार्टी दे विल बी मैनेजिंग. ओके, इसका फायदा ये है, रीजन क्या हो सकता है आउटसोर्सिंग करने? एक तो हो सकता है आपके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है, इसलिए आप स्पेशलाइज नॉलेज लेने के लिए उसको आउटसोर्स कर रहे हो. दूसरा हो सकता है कॉस्ट एफिशिएंसी. रीजन बीइंग कि आपको वो इंफ्रा ना डेवलप करना पड़े, आपको वो रिसोर्स पर्सन हायर ना करना पड़े, इसलिए आप पूरा का पूरा वो काम क्या करते हो, आउटसोर्स कर देते हो, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, कॉस्ट सेविंग हो जाती है ड्यू टू द इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड रिडक्शन इन द ओवरहेड, राइट. Okay. Similarly, we'll be discussing the pros and cons of this outsourcing. Pros तो आपका ये हो गया कि भाई चलो flexibility है कि भाई आपको जब मन किया, since you have not developed your own infrastructure, you can just cancel the contract and ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक compensation fee पे करनी पड़ेगी. दूसरा क्या है, access to global talent, है ना. जो टैलेंट अमेरिका में, यूएस में, यूरोप में है, इफ that is not there with your organization or your economy, then you can just outsource that activity, है ना. तो आपको access to global talent मिल जाता है. ओके,
इसका डिसएडवांटेज वही है कि आप अपना कंट्रोल खो देते, बिकॉज यू हैव टू देन डिस्कस द होल कॉन्ट्रैक्ट एंड एवरीथिंग विद द थर्ड पार्टी, है ना। तो आपका वो मतलब कंट्रोल एंड कॉन्फिडेंशियलिटी वाला थोड़ा इशू आ जाता है। दूसरा डिपेंडेंसी, यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन द थर्ड पार्टी की, अगर वो देगा देन ओनली यू विल बी एबल टू डिलीवर। तो डिपेंडेंसी एक इशू हो जाता है। इसका एग्जांपल जो है नाइकी है। नाइकी इट आउटसोर्सेस इट्स मैन्युफैक्चरिंग to take advantage of global expertise and cost effectiveness while focusing in-house resources on design and marketing। वो in-house क्या फोकस करते हैं? in-house उनका डिजाइनिंग और मार्केटिंग है। वो आउटसोर्स क्या करते हैं? आउटसोर्स करते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस जस्ट कि इन हाउस उन्हीं एक्टिविटीज को रखा जाता है जो कोर होगा, ताकि जो है बिजनेस जो है वो फोकस कर पाए अपने कोर एक्टिविटीज पर, और जो और सारे एक्टिविटीज हो जाते हैं दैट कैन बी आउटसोर्स्ड। ओके, सो लेट्स जस्ट डू द कंपैरेटिव एनालिसिस। तो कंपैरेटिव में सबसे पहला चीज आ गया कॉस्ट। इफ वी डिस्कस ऑन कॉस्ट, देन इन हाउस में आपका हायर कॉस्ट हो जाता है बिकॉज द सैलरीज एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड इंफ्रा एंड ऑल हैज टू बी डन। आउटसोर्सिंग में क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट होता है, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं लगता है ना। जितना यूनिट का आप ऑर्डर दोगे उतना आपको पैसा देना होता है। अगर एक्सपर्टीज में बात करें तो इन हाउस में एक्सपर्टीज जो हो सकता है वो कि आपके पास स्किल प्रोफेशनल्स ना हो। आउटसोर्स में आपको हो सकता है कि ग्लोबल स्किल्स मिल जाए, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाए तो इन हाउस में जो है वो लेस फ्लेक्सिबिलिटी है, रीजन बीइंग कि आपको पूरा इंफ्रा डेवलप करना पड़ेगा, राइट। आउटसोर्सिंग में क्या है कि आप एक कंपेंसेशन अमाउंट देकर निकल सकते हो। सो दैट्स इट, we have discussed the in-house and outsource. I hope you have understood. Thank you so much. Bye bye.